नमस्कार। आज 8 सितंबर 2024 को डॉक्टर के HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट में हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का और व्यूअर्स का जो डॉक्टर के अग्रवाल जी के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े उनका सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक जो कंटिन्यूएशन में हमने 25 अगस्त को लिया था, जो न्यू रूल्स अभी नोटिफाई हुए हैं 29 इसको जो है जुलाई को CND वेस्ट रूल्स 2024 ड्राफ्ट रूल्स वो इशू हुए थे, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। उस पर हमने एक लास्ट में मीटिंग 25 अगस्त को की थी और उस पर हमने जो इसके जो प्रोविजंस हैं रूल्स के नोटिफिकेशंस के जो अभी ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई हुए हैं नोटिफाइड हुए उन पर हमने डिस्कस किया था। और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि अभी तो 2016 रूल्स में बेटर थे और आई थिंक अभी जो EPR वगैरह इंट्रोड्यूस हो रही है उसमें उस तरह के प्रोविजंस नहीं हैं। तो आई थिंक दीज कमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड सजेशंस एंड कमेंट्स हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द पब्लिक और इसको 60 डेज का टाइम दिया गया है। तो सितंबर के लास्ट वीक में ये कंप्लीट हो रहा है। तो वी हैव टू एज फ्रॉम द HCFI we will also send comments, though other organizations, other companies, they must be sending who are direct like stakeholders. But as a organizations, डॉक्टर के अग्रवाल जी की ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाउंडर थे भाई डॉक्टर के अग्रवाल जी, उनका जो वर्क है पब्लिक हेल्थ एनवायरनमेंट पे, तो उसमें हम लोग भी अपने डिफरेंट एक्सपर्ट टॉपिक जो है लेते हैं और इसमें आज के डिस्कशन के बेस्ड ऑन विल फाइनल द कमेंट्स हम भेजेंगे मिनिस्ट्री को। सो मैं अभी हमारे कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ऑन द वे हैं एक्सपर्ट लोग। तो मैं सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजीव जी और इनके कोई कलीग हैं, इफ यू कैन फॉर सम टाइम इफ यू कैन जस्ट थ्रो ऑन लाइट ऑन द पर्टिकुलरली द न्यू जो ड्राफ्ट रूल्स हैं। और संजीव जी RE सस्टेनेबिलिटी से हैं और बाई चांस इस समय ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो बट फिर भी इनका इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में हमारी मीटिंग में। तो ओवर टू संजीव जी। Yes, very good noon, sir. And yeah, I'm traveling, but I would like to participate. My colleague, Mr. Aditya Damodaran, has been working with me on this, and he has prepared a comparison as well as the most important features of how the existing rules, how the new rules and the supersedes the over rules, and what are the areas of improvement which needs to be incorporated as a part of suggestions to be made, and what are the things which are missing there. So can you move to the next slide, Aditya? Yeah. Yes. So since I'm doing on mobile, I will be finding a bit difficult, but then I'll just say that the existing rules had some definitions on bulk generators, role of ULBs, role of SPCBs, state government, CPCB, BIS and IRC, Indian Road Congress, NBCC, and am I audible? Yes. Yeah. So some problem. It's okay. Yeah. Yes. So National Building Congress and IRC, and then there was some BIS standards on the product in terms of what will be the standard for each type of product which is likely to happen. And there are generally 4 types which was defined. So this was there on the existing rules, but in the present rule, this whole section is not completely covered. So all these rules, all these comments which we are making right now is under the presumption, and it is having a legal backing that once this new rules comes into effect from April 2025, the previous rules get null and void. So
my submission and suggestion is that when we are reviewing and when we are giving the final suggestion to the ministry, this needs to be re-evaluated, that whatever was there in the previous rule needs to be, certain section is must to be mentioned in the new rule, so that it becomes a totality and a continuous process. Go to the next slide. In the new rules, which is to be implemented from next year, certain important thing, the major focus is on the bringing in the extended producer responsibility as a major component, so as to track, so as to enforce, so as to make it producer as well as user accountable to the products coming out of this. So the whole focus of the new rule is only on bringing in the entire thing under EPR. With that in mind, they have clearly defined about the processes and targets are clearly defined, wherein they say there has to be a collection point, which will be an authorized collection point to be maintained by the urban local body, intermediate storage points, and process facilities. And all these three components needs to be maintained by the urban local body. Urban local body can do it on its own or can engage through any partner. Then there are certain things on the construction demolition which is lying on the open land, which they define it as an unclaimed waste. So that unclaimed waste also needs to be covered by the pollution by the urban local body. Then there are producers who are generating the waste and who are also generating the products. There is a target defined and the waste management plant and the waste utilization plant. So these have been the enabling things to bring everything as to who generates, how he handles, and where it goes. So that is the focus which is now coming up. Then comes the C&D waste management rule, obviously defines about EPR, but does not give modality or the framework of how the EPR will get implemented. So this rule is giving the framework for EPR rule. Responsibilities of the stakeholders are clearly defined. And also one important fact is the polluters pay principle, which is in the form of levying of environmental compensation if not properly done, if not properly done either in terms of generation or in terms of management. And if there is certain things which somebody is doing a fraud or just doing some paperwork to think, then there is a penalty attached through environmental compensation is also mentioned in these rules. Go to the next slide. So there is a basic information of the EPR, that is one, as a generator and the producer has to do some registration, and the registration is to be done by the producer, the operator, and the recycler. Then comes the information on the what waste quantity generation. Those are the details in the web portal which is defined. False information or willful concealing information will be get caught. EPR certificates will be valid for 3 years. It can be exchangeable and it can be traded. The proceeds from the transaction of EPR certificates shall be equally be divided into or shared by implementing agency as well as the operator, or here in most cases. Implementing agencies in most cases will be urban local bodies. EPR certificates issued in domination of 100 to 500 to 1,000 tons is the dominations which they will be generating. The generation criteria shall be given into converted weightage after the amount deposited, and a producer may purchase EPR certificate limited to its EPR liability for the current year, and CPCB shall fix for the highest to the lowest price for the exchange of the EPR certificates. They have given certain formulas which will be implemented through, which will be defined through some committee as to what will be the
value of the each EPR certificates. Then it is framework for recycling target. If it is reconstruction, then there is certain target that you have to do 50% EPR certificate. For example, if somebody is renovating its flat, which is more than certain 20,000, generates 20,000 tons of waste, then for the year it will be 50. Since it is a base year, 25, 26, they have kept 50%. And if it is complete demolition construction, then it is again 60%, followed by 100% from next year onwards. So that is how it is being defined. Next, utilization certificates also has been very clearly defined. 20,000 square meters area and above will fall under the use of processed waste. If you are doing any construction which is of more than 20,000 square meters, you have to use certain processed material, and that processed material has to be sourced in through the refurbished material taken out from the construction demolition facilities. Monitoring implementation. And then this is how in the roads and construction, each year mandate has been provided, followed by another minimum waste utilization for the next year. Next slide. In chapter 4, the responsibilities have been defined. Waste generator and producers are defined. Recyclers, operators, and intermediate waste storage facilities have been defined. Then the standardization agencies like BIS and Indian Road Congress has also been defined. The role of central government is very important here, because each department, whether it is MAHUA, which is road transport, commerce industry, finance, and it's like Panchayati Raj, where a lot of construction material across the country, it becomes a part of construction work being undertaken by government through various schemes. There is a policies have to be defined so that it gets reaches to the implementing authority. For you, CPCB has to maintain the portal of EPR portal. Detailed guidelines and SOPs will be prepared by CPCB. Action against violations and non-compliance. Training programs for capacity buildings has to be organized by are supposed to and see that enforcement is happening. They are also ensuring inventarization of waste and levy compensation against non-compliant, along with development of infrastructure for collection, intermediate storage points, and recycling. Next slide. Then you have compensation, which is year on year also defined, so that there will be imposition, there will be no ambiguity as to how they have come out within how they will have the compensation, not arbitrarily. There will be no compensation imposed, and then there will be a steering monitoring committee. A lot of things have been mentioned, which needs to be SOP and action point should be given there. Slide. Next slide. So these are the major ones where we have other parts are taken from various studies. We will be circulating this presentation to all of you, and needs a lot of discussions and deliberations, because it's an important factor. The importance is not only on construction demolition, but the more important lies in the type of waste not getting mixed with the municipal solid waste. I think I believe that this particular construction demolition waste plays a very crucial role in defining the quality of the waste which comes through the municipal solid waste, which has got a different treatment and technology and treatment. If this waste gets properly covered up in larger urban areas and even mid cities, probably the quality of the waste reaching for the municipal solid waste
with focus on both the circularity for construction demolition and municipal solid waste can take up at a better speed and better outcomes can be there. I would also request my colleague, Mr. Aditya Damodaran, who is from IIT Bombay. He is working with me. I have missed out something. I would request Aditya to please present. For everybody says this presentation has been prepared by him only. So he has given a lot of time to come out with. Aditya, over to you. Aditya, would you like to speak something? So, am I audible? Yeah, you can, please. Okay. Thank you, Sanjeev sir. Thank you, Anil sir. Thank you, everyone. So, this current C&D waste management rules 2025, which will come into effect by next year, April. It has, like the presentation mentioned, it has given some clear-cut definition regarding implementation. It has a very clear definition of targets, what needs to be achieved. And there are also provisions on what a processing facility should have, and then what an intermediate facility should have, etc. These were not particularly covered in 2016 rules. So apart from the presentation that was mentioned, they were also we also did a study on current C&D waste landscape. Like one portion is the ministry, MOEFCC, they have given rules, but again, when it comes to ground level study, there are some gaps here and there. So that part we are working out. So as Sanjeev sir mentioned, we'll try to add more insights to what are the present conditions in the ground level, and we'll circulate the information to the committee. So that was all I have to say. Thank you. Yeah, thank you, Aditya. And Sanjeev ji, if you can circulate this presentation to group also, that will be helpful for the, making some also the important comments from the on behalf of HCFI. So I request that the presentation, if you can send us to the group also, that will be good for us. That way. So now I'll request Dr. Ravindra Kumar. He's from the chief scientist, from CRRI, Center Road Research Institute, because a lot of this kind of C&D waste is being used in the road work that way. So I'll request Dr. Ravindra Kumar that if you can, how, particularly utilization part of the C&D waste, particularly, and what is the current and what is the new rules, if you can just make some highlight on that actually. Over to Dr. Ravindra Kumar. सबसे पहले नमस्कार और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया इन्होंने। मैं अभी बहुत ज़्यादा तो डिटेल मालूम नहीं है नया रूल्स के बारे में। मैं अभी 15-20 दिन से काफ़ी ट्रैवलिंग में बिजी था, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के चेन्नई तक। जी, आई अंडरस्टैंड आपका रोल जो है, बिकॉज़ यू हैव बिगर रोल इन द इंस्टीट्यूट। हाँ, तो लेकिन ये टॉपिक बहुत बढ़िया उठाया आपने और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन था अभी जो इन्होंने डिस्कस किया है। वही एक मुझे जो जनरल इशू ये नहीं समझ में आ रही है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द माइंडसेट, व्हाई इज नॉट बीइंग पॉपुलराइज्ड एट द टेंडर प्रोसेस लेवल। तो मैं तो जस्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप लोग का क्या मतलब राय है, क्या दिक्कत आ रही है? मेन प्रॉब्लम संजीव जी अभी हमारे साथ मैं डिस्कस करूंगा। एक हमारे यहाँ से मिस्टर नीलेश गुप्ता हैं जो हैं इंडो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन से, मैं वहाँ उनसे भी डिस्कस करूंगा अभी। तो मेन इशू है बिकॉज सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस रिसाइकलिंग प्लांट। एक्चुअली प्लांट सेटअप किया दिल्ली में, एग्जाम्पल यू नो दैट कि हमारे पास आज 5 प्लांट दिल्ली में, आई थिंक वी पायनियर पर्टिकुलरली स्टार्टेड विद दी एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। 2 अदर और भी जगह हो रहा है, मतलब बट दिल्ली में बहुत लीड ली गई और मोर देन 5,000 टन की कैपेसिटी, और अभी नया प्लांट एक और आने वाला, गोइंग टू बी मोर देन 6,000 टन पर डे। बट सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्लांट इज क्वेश्चनेबल बिकॉज पर्टिकुलरली जो इनका जो ऑफटेक है ऑफ द प्रोडक्ट्स, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी किसी प्लांट की तभी डिपेंड करती है कि एक वो उसमें एक रेवेन्यू मॉडल हो, रेवेन्यू जनरेशन हो, जो अगर आपको कोई भी ऑपरेटर कर रहा है तो उसको जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी प्लांट की हो, ऑफटेक हो ऑफ दी प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं या रिसाइक एग्रीगेट्स हैं या जो सॉइल है। जब तक वो नहीं होगा, आप किसी भी मॉडल से आप जो है कोई इंसेंटिवाइज करें, जब तक कि रेवेन्यू मॉडल प्रॉपर नहीं होगा। आई थिंक वन ऑफ दी ऑफटेक इज द मेन इशू, वो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे।
और आपसे अभी हम फिर विल गेट बैक टू अदर फर्दर ऑल्सो. So I'll request Mr. Nilesh Gupta, who is a Vice President in the Indo Environment Integrated Solutions Private Limited, who set up the about 4 plants in Delhi, particularly in the Burari plant, which is a pioneer plant. I mean, started long back in 2009, and with the help of Municipal Corporation of Delhi. I mean, jointly it was earlier IRFS was there, so it is taken over by Indo Environment Integrated Solutions Private Limited. So, and the other Sasti Park plant, Kani Kheda plant, and Mundika plant. I mean, this is some plants are also set up here. So, I'll request Mr. Nilesh Gupta, what are your experience, particularly with respect to new rules? What are your earlier experience of the sustainability of the plants, and what should be in the new rules? Over to Nilesh Gupta. आप अनम्यूट कर लें. Good afternoon to all colleagues. Yeah. I think मैंने अनम्यूट किया है. Am I audible? ठीक है, ठीक. Yeah, I'm you are well. Okay. So once again, good afternoon to all. And so far as C&D waste management is concerned, let me tell you, I have recently only started this journey in C&D waste. I was actually working in MSW segment and waste to energy first plant at Okhla. I was associated with that. But since past 6 months, whatever understanding I could have gathered, and in between this C&D waste rules have also come. So I will, share my thoughts on that. So as what Mr. Sanjeev Kumar has mentioned, and then Khandelwal Sahab also is there in the call. See, so far as challenges with regard to C&D waste management rule is concerned, is even the prior rules of 2016, the awareness of those rules in the relevant industry as well as government agencies was also limited. So people were not much aware of initial rules, 2016 rules, and now there has been change. Now the recent new rules have also come. So the major challenge which C&D waste industries as of now is facing, as what Mr. Anil Kumar has rightly said, was with regard to the offtake of the finished product. Unlike MSW, whether you produce compost or you produce energy, primarily you have to handle only 50% of the incoming waste in MSW scenario. However, a bit different in case of C&D waste, you have to handle almost 100% input waste which is coming, and then you recycle it or you process it, and then you convert it into almost 95 to 100% of output waste again, which will be recycled material, whether it is aggregate, whether it is sand, or whether it is value-added products, what you make from the finished products like aggregates and mixing it with sand and all. So the biggest challenge for C&D waste management plants is regular offtake of the finished products, so that you can continuously take limited area is available within the plant, 5 acres or 7 acres, you have the land available. And then probably if you see in terms of offtake, which is actually quite seasonal, like once monsoon is there, plant capacity goes down, and then offtake down. Primarily in Delhi NCR situation, just a second, I think I'm getting a call. So if we talk about Delhi NCR, they have a particular scenario with regard to GRAP situation which prevails in November and December. So construction activities goes down, and then probably NGT ban, which affects almost 2.5 months. Prior to that, there is a monsoon season. So in monsoon, construction goes down, and then plant efficiency also goes down. So that way, what my analysis has been in past 6 months, what effectively I have seen that on an annual basis, these plants are basically, working at 50 to 55% capacity levels in terms of offtake. So that is a bigger challenge. Like, though there is no dearth of input C&D waste, but once you start talking about efficiency of the project, efficiency of the plant, annual capacity available, it is hardly 50-55% in terms of data, if I say. So though that in Delhi, I think the plant has been working since past 12 years almost now, 2008 to 2010, the first plant came up, Mr. Pradeep Khandelwal and my colleague Sandeep Malhotra has been involved in that,
and I believe they have the maximum experience available, on ground experience available with them. They will also be sharing his thoughts on that. But the primary challenge is basically with regard to offtake of the finished product, which needs to be addressed, and that too, a lot of awareness issues is there. Industry people are not aware. We have been, working on doing some sort of survey within Delhi NCR with regard to awareness of, CND based rules 2016 as well as CND based rule 2024, which has recently came. So people are not aware, though there is a mandate, but nobody is aware. So, and another important aspect is enforcement challenge. Like, those are rules are there, but the monitoring and enforcement of these rules is a bigger question, and that is the primary reason why offtake is not there. So these are some initial thoughts. Apart from that, with regard to the rules which has come in 2024 and where we have to submit our comments by this month end, primarily I feel, this 20,000 square feet area which is being mentioned, and the producers or other, the agencies on which this EPR will be obligated to follow will be those builders who have been under construction or constructing a building beyond 20,000 square feet area. This seems to be a bit, square meter. It is a bigger area. So it is a very, it's a quite bigger area, and we need to see. Yeah, and then we need to see how much construction which is going on in Delhi NCR will get covered under these EPR rules. This is primarily I'm talking about from Delhi's point of view, but if we talk about pan India, city A, city B, city C, the limit is going to remain the same. So how much, it's going to cover up those builders or those, producers, CND based producers? That is a big question we need to understand. And this 20,000 square meter area has come for the first time. So I believe this area should be reduced so that, in class B or class C cities and even in class A cities, a number of, obligated agencies should increase. Otherwise, we need to see how many agencies are there on which this EPR rule is going to be mandatory. So these are these are few thoughts which I thought I must share with the forum. Yeah. Apart from other this thing. Yeah. Thank you, Nilesh. Thank you so much for your giving the very valuable inputs on the particular new rules. And definitely we'll come back. If Khandelwal ji is back and because he was traveling, so I'll request. ठीक है. Yeah. हमने कमेंट्स तो वैसे ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए थे, रूल पे भी और ईपीआर पे भी. मेरा क्वेश्चन अब संदीप और आदित्य से है, अगर ये लोग सुन रहे हो तो, कि जो ईपीआर में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसाइकल मटेरियल का क्या एडवांटेज देना चाहते हैं वो. ये आई थिंक मिसिंग है, बहुत तगड़ी चीज. मैंने पोल्यूशन करा, मैंने सीएनडी वेस्ट जनरेट कर दी, मैंने उसको प्रोसेस कर दिया, मेरे को ईपीआर लेना है, लेकिन मेरे को अगर मैं रिसाइकल मटेरियल यूज कर रहा हूँ ऑफ रिसाइकल मटेरियल, उसका कहीं भी कोई एडवांटेज इन्होंने नहीं दिखाया है. आई थिंक क्या संजीव जी, क्या आपका ख्याल है इसमें ईपीआर में कुछ उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए ना? नहीं मिलना चाहिए सर. अगर मैं 20,000 स्क्वायर मीटर से अधिक का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे ऑब्लिगेशन है कि मैं ILNFS के प्लांट, बुरारी प्लांट से X% X ईयर में यूटिलाइज करूं. नहीं, जो ईपीआर जो है मेरा, वो तो डिस्पोजल के लिए है ना, कि मैंने जनरेट किया, मैंने प्रोसेसिंग करवा दी और मेरे को ईपीआर मिल गया, मैंने ILNFS से प्रोसेसिंग का ईपीआर ले लिया, बट मैंने यूज कहाँ किया मैंने? थोड़ा ये अच्छी बात है. मैं आंसर सही हो सकता है नहीं दे पाऊं, बट डेलिब्रेशन के पॉइंट से बोल रहा हूं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Here, anybody who is having construction of 20,000 square meters is to be considered as producer of waste. I agree. So, as a producer of waste, he is supposed to get waste, recycled products coming out from recycling to be utilized. No, he is not supposed to get.
He is supposed He to utilize. get it processed. He is also supposed to utilize. This Where is what it is the not essence of. in EPR, it is not written. In EPR, it is not written. मैंने बेस लिया, मैंने ILFS को प्रोसेस करने के लिए दे दिया, ILFS ने प्रोसेस कर दिया, ILFS ने प्रोसेस करने के बाद क्या किया उसका कहीं जिक्र नहीं है, और ILFS ने कहा मैंने 1000 टन प्रोसेस कर दिया, 10 सर्टिफिकेट 100 टन के आप ले लो मुझसे। वो 1000 टन गया कहाँ? दैट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। I believe, sir, in the portal, this will get captured. This should get captured. बट इन नहीं, मैं 1000 टन आपसे लिया और 1000 टन अनिल जी को बेच दिया मैंने तो तो आपने, एक मिनट सर, ट्रेसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट देयर। ट्रेसिबिलिटी ये जरूरी नहीं है कि मैं कहां से उठा के कहां ले जा रहा हूं। ये जरूरी है कि मेरा जो बाय प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर, जो भी प्रोड्यूसर्स है इंडिया में, कोई भी हो सकता है कि मैं दिल्ली मेट्रो को कोई कॉन्ट्रैक्ट चेन्नई में मिला है, दिल्ली मेट्रो को कोई कॉन्ट्रैक्ट चेन्नई में मिला है और चेन्नई में सीएनडी प्लांट नहीं है और दिल्ली वाला जो है वो चेन्नई मेट्रो को बेच रहा है, तो दैट इज एन ऑब्लिगेशन गेटिंग फुलफिल्ड। ऑब्लिगेशन इज गेटिंग फुलफिल्ड, बट दिल्ली का जो यूटिलाइजेशन प्रोसेस का, तो आई एग्री कि प्रोसेस तो उसने इंश्योर करा दिया, प्रोसेस के बाद यूटिलाइज हुआ वो प्रोसेस मटेरियल या नहीं हुआ, ये कहाँ पे मॉनिटर हो रहा है? So if you see the kind of responsibilities being defined in the MORTH, and उसमें यही चीज का तो जिक्र कर रहा है कि भाई जो भी चीज यूटिलाइज कोई भी आप लगा, अभी क्या हो रहा था कि MORTH है या रूरल पंचायती राज है। संजीव जी, 2016 में BIS ने, CPWD ने, IRC ने, तीनों ने अपनी अपनी गाइडलाइंस और सर्कुलर और सब कुछ निकाल दिए, इवन रेट्स तक निकाल दिए फॉर रिसाइकल प्रोडक्ट, इवन देन देयर इज नो ऑफ टेक। मैंने प्रोसेस तो कर दिया, यहां तक तो आई एग्री, आपने जनरेट किया, आपने मुझे दिया, मैंने प्रोसेस कर दिया, मेरी प्रोसेस स्केल के हिसाब से आपको मैंने 10 सर्टिफिकेट दे दिए। नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसा एक बार क्लियर कर दूं, जो अगर शेड्यूल 1 में देखें EPR ओनली फॉर दी टारगेट फॉर रिसाइकलिंग में है, मींस आपको कितना टारगेट करना है EPR उसके लिए, पर यूटिलाइजेशन में शेड्यूल 2 में वो कहीं पे नहीं है। दिस इज मिनिमम टारगेट यूटिलाइजेशन, EPR में नहीं है, दिस इज जस्ट टारगेट दे दिया है, बट हाउ EPR में कि मैंडेटरी EPR उसको मिलेगा, वो नहीं है, वो होना चाहिए, बिकॉज तभी ये वो हो पाएगी। अगर आप शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 प्रोसेस मैंने कर दिया, लेकिन रीयूज किया या नहीं किया वो मेरे पास कहीं भी मॉनिटर नहीं हो रहा। आपको सर्टिफिकेट मिल गया लेकिन आपने यूटिलाइज करा कि नहीं करा है, और आपकी ऑब्लिगेशन नहीं आपके पास आया है। आपने जनरेट किया, मैंने प्रोसेस कर दिया, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। प्रोसेस वहां पे भी होना चाहिए, शेड्यूल 2 में भी यही होना चाहिए कि दिस इज ऑब्लिगेशन, कि आपको जो 5% से लेकर के उन्होंने दिया है 25% तक, इट शुड बी ऑल्सो एज ए ऑब्लिगेशन ऑल्सो, कि अगर जो भी अगर आपने अगर एक प्रोड्यूसर को किया है, प्रोड्यूसर का भी ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि यूटिलाइजेशन में भी EPR होना चाहिए, या EPR जब भी मिलेगा जब मैं यूटिलाइजेशन भी दूं। यस खंडेलवाल सर, हाँ जी, तो आर वी सेइंग कि जो EPR सर्टिफिकेट इशुएंस का प्रोसेस है, उसमें CND वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग के साथ साथ वो ऑफटेक भी होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, तभी EPR कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, मतलब वो सर्कल बैक होकर लूप क्लोज होना चाहिए, लूप क्लोज होगा तो सर्टिफिकेट इशुएंस का प्रोसेस होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए। एक पॉइंट मेरा इसमें और था, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई थिंक इट इज रेलेवेंट आल्सो हियर, कि आप देखें कि CND वेस्ट अगर आप शहर का एनालाइज करें तो प्राइमरली 50 से 60% कॉर्पोरेशन वेस्ट, जो कॉर्पोरेशन के सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ पर रिटेल कंस्ट्रक्शन होती है, उससे जो वेस्ट जनरेट होता है वो आपके प्लांट में आता है, और 30 to 40% में भी आपके पास वो आता है जो बल्क वेस्ट जनरेट होते हैं। प्राइमरली जो बल्क वेस्ट जनरेटर का वेस्ट है वो तो इस EPR रूल्स में कवर हो रहा है थ्रू सम वे ऑफ कि 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर का जो वो ऑब्लिगेटेड है EPR रूल्स में, तो बल्क वेस्ट तो कवर हो रहा है, लेकिन जो 50 से 60% रिटेल वेस्ट जनरेट होता है वो एक चैलेंजिंग एरिया भी है कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको कैसे आप मैप करेंगे और उसके ऊपर ऑब्लिगेशन कैसे आएगा, क्योंकि 60% अगर कंस्ट्रक्शन रिटेल में हो रहा है तो वो रिटेल कंस्ट्रक्शन पर्सन आर नॉट मैंडेटेड कि वो रिसाइकल प्रोडक्ट यूज करें। आई थिंक ये भी एक पॉइंट अपने को। मेरा दूसरा क्वेश्चन रविंदर जी से है। रविंदर जी सुन रहे हैं ना?
जी बताइए। हाँ, कि इन्होंने जो ईपीआर मैंडेटरी करा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 20,000 स्क्वायर मीटर एंड अबव, सो हाउ योर रोड विल कवर अंडर दिस? नहीं आपकी तो एक इसमें छोटी सी गली भी 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो जाती है। इसमें इन्होंने ये लिखा है ना कि जो यूटिलाइजेशन फ्रेमवर्क है टोटली पोर्टल से आपको वो करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, और उस पोर्टल में ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा रिसाइकलर का और नहीं ऑक्युपायर्स नहीं नहीं का। रविंद्र जी, मैं अभी 20,000 स्क्वायर मीटर इन्होंने बोला है कवर्ड एरिया। हम्म। अब रोड वर्क में कवर्ड एरिया कहाँ से कैसे काउंट होगा? इसका कोई थंब रूल या कोई रूल है? मेरी रोड तो से 6 किलोमीटर लंबी रोड है, हाँ 4 तो लेन। होती है ना, उसकी जो भी थिकनेस होगी और उसका नहीं नहीं, विड्थ उसको होगा वो स्क्वायर तो मीटर कवर होगा ही। उसको मतलब उसका भी स्क्वायर मीटर में कवर करेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ। मतलब तो कवर्ड एरिया और वो जो बिल्डिंग का कवर्ड एरिया और रोड का सरफेस एरिया इज द सेम थिंग? नहीं, इसकी थिकनेस भी तो होती है रोड में। नहीं नहीं, वो एक्चुअली बात तो एरिया से हो रही है ना, थिकनेस भले ही हाँ कुछ भी हो। हाँ, मतलब थिकनेस भी होती है, वॉल्यूम में होएगा। रोड में तो वॉल्यूम तो ले ही नहीं रहा, वॉल्यूम को तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो सरफेस एरिया की बात कर रहा है। इस सरफेस एरिया में तो मुझे थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी मुझे आएगी लगता नहीं, ये मतलब मैं ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे है। नहीं फोरम नहीं, पे यहाँ उठाना तो चाह रहा हम हूँ, तो संजीव जी और वॉल्यूम में ही आदित्य को करते ये हैं, क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ हम कि लोग तो इस चीज वॉल्यूम में को ही करते हैं इसको। हाँ, हम्म। इसको कैसे कंसीडर करेंगे? सरफेस एरिया में करेंगे फिर तो नीचे जो कितना गया आपको 1 मीटर भी जा सकता है, हाफ मीटर भी जा सकता है, 40 में mm भी जाता है। ये नहीं बड़ा चैलेंज होगा। I think we have to listen, understand from the part of obligation or the problem which Mr. Nilesh was saying, and we also face the same problem that the हाँ, byproducts are not getting properly sold off, or there is no बिल्कुल। market to it. और That is the उसको bigger problem. और Please, इसको इसमें रूल में कहीं फॉलो, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लगेगी कि मिनट, आप बनाओगे। खंडेलवाल साहब, क्वेश्चन रेज करने से प्लीज क्वेश्चन को सुनिए. चलिए So बोलिए। my point is 20,000 square meter is a benchmark thing which they have started as a to begin with. They are obligated to use certain portion of their raw material from these byproducts. This is the intent. Now the question is whether 20,000 square meter in terms of area and all that can be detailed out, and that is why this is a draft rule. We have to put up the question. Is that intent correct? Is a question we have to see. What all is comes under the matter of enforceability, that needs to be also raised on. So the intent is to bring C&D in the form of EPR, and the obligation to the larger fish, which is 20,000 square meter, is the basic concept of it. What first question was that whether usability नहीं generator and is raised or not is a valid question. Yes, it has to be there. यस संजीव जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा. आई डोंट नो, आई मे नॉट बी करेक्ट Sir. दैट. पर्टिकुलरली जो इसमें वेरी शेड्यूल 1 में जो वेरी क्लियर दिया है कि जो टारगेट फॉर रिसाइकलिंग, दिस इज एनजी एज ए ईपीआर, दैट वाज द फ्रेमवर्क. देयर इज a 2025-26 50% reconstruction project and demolition 50%, and for 26-27 100%. Only for the schedule 1 they have given the EPR, but in schedule 2 and schedule 3, where for utilization of waste is not mentioned the under EPR, that was just a target, just like yeah. So this is very schedule 2, where for road and the for the both I mean kind of the utilization का दिया है, road construction or building construction. They have not given any under the like schedule 1 में दिया है कि under excellent produce smart framework, ये नहीं दिया है. वो क्लियरिटी नहीं है. अब जैसे डिमोलिशन रोड Are वर्क they में डिमोलिशन वर्ड यूज falling नहीं होता. under schedule 2 में sir? Are they I am not having the copy right now, excuse me for that. Schedule 2 and schedule 3 में are they mentioned about 20,000 square meter? Do they No, get covered? not at all. General है. This is very general for the So 5%. do they fall under 20,000 square meter or not? No, I mean this is not given any EPR thing. Like just schedule 1 में very clearly दिखा है target for recycling of waste as per Senate Produce Responsibility Framework. उसमें दे दिया 50% reconstruction, 50% demolition, and next year 26-27 onwards में 100%. But for schedule 2, there is no mention of the EPR, just like you mentioned in schedule 1.
तो वही नहीं। तो यूनिट किया है ना 20,000 स्क्वायर मीटर सर। नहीं, कोई नहीं, भी नहीं। चीज हो वी कैन मेक आउट, बट क्लियरिटी नहीं है दैट। ओके या दैट मे बी, बट मेरे कहने का मतलब जो मेरी समझ है, सी आई एम ऑल टॉकिंग अबाउट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड in terms of the problem facing. There are two problems. One problem is on the enforceability of collection reaching out to the processing plant. That is a very big problem. Obviously, as an operator, we are facing problem across the country. We are operating 8 plants in different parts, and everywhere this problem is there. And it gets mixed with municipal solid waste, so it is a bigger problem. Second is the serious problem. Why should I do it if my product does not get sold off? Get it sold off. They are saying that anybody in the country which is operating with 20,000 square meter area is obligated to use it. अब इस दोनों में ये दोनों मुझे जो लगा कि ये दोनों is the basic objective of this rule. There are many things which is missing. Which is missing, which was there in the first. Khandelwal sir was probably not there in the my presentation. नहीं, I was there. Okay, so वो सारे चीज आने हैं सर. आप you were in the last meeting also you were raising these points that needs to be incorporated, and I would हाँ, उसमें क्या करना है कि हम लोगों को we have to make a comprehensive as a part of HCFI, and we as an industry we are also working with CII to get it pushed through these changes whatever we want, and then this needs to be presented to the Secretary Environment. They are open for discussion on this. वही संजीव जी, मैं आपको बस वही बताना चाह रहा था कि एक तो रोड सेक्टर या दूसरे सेक्टर्स को इन्होंने बिल्डिंग से इक्विवेलेंट कर दिया, जो कि नहीं हो सकता, जबकि सबसे बड़ा कंज्यूमर ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट इज अ रोड सेक्टर। दूसरा खंडेलवाल जी बताइए, स्मॉलर सिटी में 20,000 स्क्वायर मीटर के कितने प्रोजेक्ट होते हैं साल में? एक दो आएंगे, कोई हाउसिंग बनेगी, कोई मॉल बनेगी, या कितने प्रोजेक्ट आ जाएंगे? Road is there, na sir. Road is there, drain is there, irrigation is there. This laying of the Jal Jeevan scheme is there. All are 20,000 square meter. कितने साल में कितने होते हैं? 2, 3, 4? सर मैक्सिमम तो वही हो ही रहे हैं ना. बड़े कहाँ प्रोजेक्ट हो रहे हैं? कहीं नहीं बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है. वही कह रहे हैं. Everywhere it is all about laying of the infrastructure, and that falls under 20,000 square meter. Yeah. So देखिए, मिनिमम प्रोजेक्ट्स बहुत कम है. मतलब यूटिलाइजेशन अगर आप उसमें करेंगे, अब इसमें कितने भी EPR लागू हो जाएगा? बहुत कम नंबर्स बहुत कम है ना. मतलब सर the day it gets through, if I put it for a small village of say suppose 10,000 population, the entire area in that, the maximum work is at Panchayati Raj, maximum work is at rural development, maximum work is at DWSS, drinking water and sanitation, maximum work. क्या वहाँ पे सिंगल प्रोजेक्ट 20,000 में नहीं आएगा? मे बी आ जाएगा अनिल जी, आ जाएगा सर. अनिल जी वो तो आ जाए, लेकिन मैं संजीव जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अगर 6 किलोमीटर की ड्रेन बना रहा हूँ, लेट अस अज्यूम 6 किलोमीटर की एक ड्रेन बना रहा हूँ, तो हाउ आई विल कंपेयर दिस ड्रेन टू 20,000 स्क्वायर मीटर? There must be some mathematical formula, ना? I think we can do it out. हाँ, नहीं, मतलब वही मैं कहना चाहता, रूल में कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूला या कुछ चीज ऐसी देनी चाहिए थी कि एक्चुअली 20,000 स्क्वायर मीटर जो लिया हुआ उन्होंने, वो ये जो हमारा EIA करते हैं ना, तो केवल बिल्डिंग वर्क वालों के लिए 20,000 था. उसमें पाइपलाइन के लिए अलग है, उसमें रोड वर्क के लिए अलग है, उसमें सबके लिए अलग है. अगर EIA की गाइडलाइंस आप देखो तो उसमें 20,000 स्क्वायर मीटर ओनली फॉर बिल्डिंग वर्क है. So what we should do, I think I got your point, sir. In the definition section, in the chapter 1 definition section, 20,000 square meter. First of all, what Nilesh sir was telling is that correct? Bringing in 20,000 as a generator in urban areas, definitely that is not correct. Correct. But as a generator in the urban areas, it is not correct. But 20,000 square meter as a part of EPR certificate purchase obligation, it is I think very correct. सर जितने कॉन्ट्रैक्टर्स को बाद में ये ना क्लास सर्टिफिकेट से इशू हो जाने चाहिए कि आपने कितना यूज किया है, कितने क्रेडिट्स खरीदे हैं, उतने क्रेडिट्स अगर आप खरीदे हैं तो इसका मतलब उतना प्रोड्यूस हुआ है. See, I can't fudge and get some data published in the CPCB portal. Neither can Nilesh, nor can Rise 11, nor can any other C&D plants processors. So जब हम ही लोग नहीं कर पाएंगे तो वो खरीदेंगे किससे? इसलिए मैं कह रहा था कि
हाँ, तो मेरा कहने का सी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डिड दे वांट टू कैप्चर, did they have they and we had no interaction, but मेरे को लगा कि जिसने भी सोच के ये किया है कि सर्कुलैरिटी को बढ़ाने के लिए अगर ये किया है, and probably that will enforce now urban local bodies. I'm much more concerned on the urban local bodies, sir. We were working with one of the cities in south, and I'll name the city when Khandelwal sir is also associated in Bangalore. Bangalore is coming out with a large project of CND plant, CND project, which is up to 5,000 tons per day. And their estimate for municipal solid waste is 5,000. What अभी does it mean? टेंडर भी आया उसका रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, अभी 4-5 दिन पहले. Yes, I have seen that. Sir, हाँ, तो does it mean that the city generates 5,000 MSW and 5,000 tons of CND? ये तो पैरेलल हो गया. इसका मतलब है कि प्लांट जो है एमएसडब्ल्यू का प्लांट में अभी वही, इसीलिए दोस प्लांट्स आर बिकमिंग डिफंक्ट, एमएसडब्ल्यू प्लांट्स, इफ एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्स्ड विद. सो द क्वालिटी ऑफ द वेस्ट, इफ सीएनडी गेट्स कैप्चर्ड, आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ yes गुड टू द एमएसडब्ल्यू मैनेजमेंट. But should be a right approach to ministry, so that at least these are amended in the and actual the right rules are notified. I mean, particularly that is our duty to at least say whatever to bring to the notice to the ministry. मेरा तो इस फोरम में ये था, जितने भी रिसाइकल प्लांट वाले लोग हैं वो इस चीज को एनफोर्स कराएं रूल में किसी तरीके से कि जो ऑफटेक है उसको भी इंश्योर किया जाए. Yes. केवल ऑफटेक के लिए कि वो लोग वर्क करेंगे ऑन द ऑफटेक इज ओके, बट दे शुड आल्सो एनफोर्स कि जहाँ पे भी ईपीआर आ रहा है वहाँ पे ऑफटेक भी कंपलसरी होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में. यू आर राइट सर, यू आर राइट, यू आर राइट. मेरा तो केवल पर्पस वो था, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि रोड वर्क से या मैं किसी जो भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अगर मैं एक मान लीजिए पावर हाउस बना रहा हूँ, वहाँ पे बिल्डिंग मेरी है ही नहीं, या ट्रांसफार्मर वो बना रहा हूँ, वहाँ केवल मतलब फ्लोर, मतलब किस एरिया को वो काउंट करेंगे, दैट आई डोंट नो. Good, I think you are right sir, you are right, yeah. you are right. I think हमें अपने पाइपलाइन डाल रहा हूँ मैं, पाइपलाइन डाल रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं कौन सा एरिया काउंट होगा. तो मैं आज इसी पॉइंट्स पे कंक्लूड करूंगा, और आज जो है बाकी देखो आई थिंक लोगों को मैं आज शायद न ले पाऊं बिकॉज टाइम की भी कंस्ट्रेंट है, संडे वाला दिन है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई की जैसे लास्ट टाइम भी मैंने किया था कि अपने अपने खंडेलवाल जी ने भेजे भी थे कंपेरिजन भी, कि अगर कोई पॉइंट्स कंपेरिजन वेरी कंक्लूडिंग अगर पॉइंट्स हैं 1 पैरा 2 पैरा में अगर आप भेज दें इसी ग्रुप में, सो दैट हम इसको फाइनली कंपाइल करके और एटलीस्ट फ्रॉम HCFI तरफ से, बाकी इंडिविजुअल तो आप लोग इंडस्ट्री से और रिसाइकलर से भेजेंगे ही, बट फ्रॉम HCFI तरफ से बिकॉज एज ए NGO एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें भेजेंगे तो उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने कंपाइल अगर थोड़ा सा पॉइंट्स अगर 1 पैरा 2 पैरा भेज दें तो हम उसको फाइनल करके विल शेयर अगेन दी फाइनल वन कंपाइल्ड वन, और उसको हम टाइमली भेज दें. तो रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग. मेरा ये कहना है कि मिनिस्ट्री केवल ये इंडस्ट्रीज की सुनती है, हम लोगों की तो सुनती नहीं है. नहीं सुनिए, देखिए संजीव की सबसे ज्यादा सुनेगी. नहीं स्टेक होल्डर से वो सबसे ज्यादा सुनेगी. नहीं, स्टेक होल्डर से मीटिंग करते हैं डेफिनेटली है, तो करते हैं हम भी जाएंगे. Sir, I had an opportunity to talk to ministry on this, and I have told about these expert groups, and they are very much keen in forming these expert groups to be there in the committee, because they themselves are very not, they do things in very hurry all these days. There some directions come and then they don't study a lot, and probably I think this should not be there, but they study to some extent, but that does not get incorporated. So you are right, we should bring in right people at right places so that there is a sector, this sector gets improved. Yes. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई विद इन ए वीक टाइम हम टाइम, बिकॉज आज ऑलरेडी 8 हो गई, 15 तक अगर जो भी कमेंट्स अपने जो भेजना चाहें, और अगर वो कंपाइल फॉर्म में 10-12 बुलेट पॉइंट में या वैसे भी कि ये शुड बी टू ब्रिंग टू दी फ्रॉम HCFI जाने चाहिए, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजीव जी से भी और नीलेश जी से भी, और यहाँ पर डॉक्टर रविंदर हैं, खंडेलवाल जी, जो भी अगर भेजते तो हम कंपाइल करके और अगेन इसको एक फाइनल वन हम एक ग्रुप में अगेन डाल देंगे तो हम इसको भेज सकें. सो इसी के साथ आज मैं तो अपना ऑलरेडी दे चुका हूँ. मैं तो हाँ नहीं आप भेज दिए, आप तो सबसे आगे रहते हैं, आई नो दैट.
लेकिन मेरे को तो We'll संजीव share से this संजीव से presentation, फिर बहुत भी sir, on this खंडेलवाल जी, forum. फिर भी आज के बेसिस डिस्कशन के बेसिस पे अगर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट हो कम समराइज वन, वो अगर डालने देख लें जी। तो इसी के साथ सबका धन्यवाद करते हुए, और जितने भी हमारे एक्सपर्ट रहे ग्रुप हैं, और डॉक्टर के अग्रवाल जी का भी 5 सितंबर को जन्मदिन भी था, तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा पब्लिक हेल्थ में, एनवायरनमेंट में बहुत रहा है। तो उसी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए सबके सहयोग से ये जो एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट चल रहा है, राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट डॉक्टर के हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, इसी में सभी मेंबर्स का धन्यवाद करते हुए, व्यूअर्स का धन्यवाद करते हुए इस मीटिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।